But what do you think about the future of a professional gaming league? I mean, is there merit to this? Is there going to be a professional sport, a big thing in America, you think? I think sometime in the future. I mean, I think the timing-wise, we don't really know exactly when it's going to happen, but I think a lot of us gamers know that it will happen sometime. Your world champion, गेमिंग जो एक टाइम पे बच्चों की हॉबीज हुआ करती थी, आज के दिन एक फुल फ्लेज इंडस्ट्री में बदल चुकी है. द इंडस्ट्री विच हैज बिकम इवन बिगर देन म्यूजिक, मूवी एंड बोथ ऑफ देम कंबाइंड. एज ऑफ 2023 टोटल ग्लोबल वीडियो गेम्स का मार्केट साइज है $282.30 बिलियन. अब आप गेस करो इसमें इंडिया का मार्केट शेयर कितना होगा? 5%, 10%, 15%? वेल, इट्स ओनली 1%. Yes, the Indian video games market share is only $3.1 billion as of 2023. However, it is continuously growing. And in India, at the center of this industry, there is this company who is operating his business. That is Nazara Technology. Nazara Technologies is a listed company in the Indian stock market and has also raised the investment from the big investors like late Rakesh Jhunjhunwala and Nikhil Kamath, the co-founder of Zerodha. Now the question is, क्या है ऐसा इस कंपनी में जो इतने बड़े इन्वेस्टर्स ने इसमें अपना पैसा इन्वेस्ट किया है? What does Nazara Technologies do? How is it building its business in the Indian video game market? What does the future hold for Nazara Technologies and Indian gaming market? And most importantly, what are the important factors that you have to look into before investing in any gaming company? I am Nitin West, you are watching Investing, and together we'll learn investing. Have you guys seen esports and the E-League? I don't know if that's... Esports is equal to sports. Gaming industry in India has seen a growth of almost 40%. Gaming was a $159 billion industry in 2019 and it will reach... So Nazara एक गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म है. हम अलग-अलग तरीके के गेम्स बनाते हैं. There are people who make more money in gaming who don't even build games today. It's very hard to imagine that gaming will be bigger than music, movies and TV shows all put together. But we will see. गेमिंग इंडस्ट्री जो आज के दिन पूरे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक सिग्निफिकेंट शेयर कैप्चर करके बैठा है, उसके इतने बड़े बनने के पीछे काफी ज्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं. Like the mass accessibility of the technology and gadgets, high quality internet and that too at the cheap price, then thanks to social media and streaming platforms for building the gaming community, and then last but absolutely not least, the unfortunate COVID-19 जब most of the लोगों ने घर में गेमिंग स्टार्ट करी. इन सब फैक्टर्स की वजह से आज के दिन गेमिंग इंडस्ट्री $300 बिलियन की बन चुकी है. इतनी बड़ी कि ई स्पोर्ट इज इन टॉक्स टू बी इंक्लूडेड इन द ओलंपिक गेम्स. अभी हुआ नहीं है बट या इट इज इन टॉक्स. और यहाँ तक कि इंडियन गवर्नमेंट हैज आल्सो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड ई स्पोर्ट एज अ प्रोफेशनल स्पोर्ट कैटेगरी. So these points are evident that gaming is booming in India. And Nazara Technology is an important player in the middle of this industry. Nazara Technology is a house of brand, which consists of different gaming segments and companies under it. Nazara Technology was founded in 1999 by Nitish Mitterji. मतलब इतनी पुरानी कंपनी. आपको याद होगा कि नोकिया के ब्लैक एंड व्हाइट फोन्स में वो स्नेक वाला गेम होता था और बाद में वो कलर फोन्स आ गए थे, उसमें वो क्रिकेट वाला गेम होता था. तो उन सब गेम्स के पीछे Nazara Technologies ही रहती थी. So from starting only, the Nazara Technology has been at the forefront of the Indian gaming industry. But the world is changing, right? And with that, the games also. So what about Nazara Technologies games? Well, as I said, Nazara Technology is becoming the house of brands of gaming companies. And with this concept, Nazara is continuously acquiring the companies not only in India, but also in USA, Singapore and many other countries. Nazara Technologies has 3 business segments. First one is the gaming, जिससे वो अपना 37% revenue generate करते हैं. Second is e-sport, which is responsible for 49% of revenue, and third is adtech, which contributes around 14% to the revenue. Now let's understand these 3 segments one by one. Gaming segment में Nazara owns the games and its IPs, यानी कि intellectual property and gaming studios. Intellectual property वो सारे intangible assets होते हैं. Those are creation of your mind. फॉर एग्जाम्पल कोई म्यूजिक आर्ट या कोई एनिमे कैरेक्टर या फिर कोई गेम का कॉन्सेप्ट. नजारा टेक्नोलॉजीज का गेमिंग सेगमेंट समझने से पहले हमें वीडियो गेम्स का बिजनेस और सप्लाई चेन दोनों अच्छे से समझना पड़ेगा. सो किसी भी गेम के पूरे लाइफ साइकिल में यानी कि गेम बनने से उस गेम को खेलने तक मेनली 3 स्टेजेस इन्वॉल्व होते हैं: डेवलपमेंट, पब्लिशिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. Development stage includes the process of game design, यानी कि coming up with an idea, concept, creating story, characters, levels, user interface, etc. etc. Then programming of the games, level design, sound design, testing and fixing, quality assurance, making improvements, putting everything together, and finally making the game ready to market. And the company or person who develops the game is known as the developer. So the development of game from scratch to making the game ready for market सब development stage में include होता है. अब जब एक बार गेम रेडी हो जाता है मार्केट में जाने के लिए, then the game enters the publishing stage, which includes the process like platform selection, यानी कि अगर गेम कंसोल में लॉन्च करना है तो किस में करना है, PS, Xbox और Nintendo.
या फिर मोबाइल में एंड्रॉइड में लॉन्च करना है या फिर iOS में। इसके अलावा पब्लिशिंग इंक्लूड्स क्रिएटिंग ऑफ कॉपीराइट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ द गेम, मार्केट में गेम की हाइप क्रिएट करना, रिलीज प्लानिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब पब्लिशिंग स्टेज में आता है। एंड द कंपनी हु लॉन्चेस एंड पब्लिशेस द गेम इज नोन एज द पब्लिशर। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज इंक्लूड्स द प्रोसेस जिसकी वजह से गेम्स कंज्यूमर्स तक पहुंच पाता है। मेनली लॉन्चिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द गेम इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स लाइक Steam, Epic Stores, Google Play Stores, App Store, etc. और launching the game through CDs in physical stores like GameStop, Best Buy, Target, etc. etc. For example, कुछ टाइम पहले यूट्यूबर्स के बीच में एक गेम काफी पॉपुलर हुआ था, Fall Guys The Ultimate Knockout. This game was inspired by the show Takeshi Castle and was developed by Mediatonic Studio. ये गेम डेवलप होने के बाद इसके डेवलपर मीडियाटॉनिक ने इस गेम के राइट्स बेचे दूसरी कंपनी को, which was Devolver Digital. And Devolver Digital launched and published the game through Steam in PC and PlayStation in console. So the developer was Mediatonic, publisher and distributor was Devolver Digital, and distribution platforms were Steam and PS4. आप वीडियो गेम के प्रोसेस को फिल्म इंडस्ट्री से भी काफी हद तक कंपेयर कर सकते हो। A developer is similar to a director, publisher is similar to a producer, and distribution का प्रोसेस तो दोनों में इन्वॉल्व होता है। For example, the iconic movie 3 Idiots was directed by Rajkumar Irani, produced by Vinod Kumar Films, and distributed by Reliance Big Pictures through PVR. Similarly, Minecraft game was developed by company Mojang Studios, and then it sold it to Microsoft. So Microsoft became publisher and distributor of the game, and Microsoft distributed the game through Xbox Store and PlayStation Store. So if the company is only doing development of the game, तो उसमें revenue sources बस एक ही है, that is selling the IP of the game to the publisher. As the publisher of the game, there are multiple sources of revenue. If the game is paid, then either selling of the game or the subscription fee, and if the game is free, then the in-game purchases, advertisement and royalties are the revenue sources. So gaming segment में Nazara Technologies act as both the developer and the publisher. अभी Nazara के portfolio में बस 3 टाइप की गेम है. First one is early learning games, which targets the children, and the purpose of these type of games are entertainment plus brain development of the child. Nazara has 2 games in these segments. Those are Kidopia and Animal Jam. Kidopia targets the children of the age group between 2 to 8 years old, and Animal Jam targets the age group of 9 to 11 years. And both of the games generated over 272.8 crore rupees in financial year 2023. Second type of games that Nazara Technologies has in its portfolio are the real money games, which includes the games like Classic Rummy and Hala Play, which is a fantasy sport like Dream 11. As the name suggests, real money games में users put their real money into the game, and with their skills they try to gain more. काफी लोग इसे ऑनलाइन गैम्बलिंग भी कहते हैं, but this segment of gaming is really booming in India. कुछ टाइम पहले तक तो हर दूसरे दिन कोई नए ऐप के बारे में सुनने को मिलता था, और ये स्टेटमेंट तो इंटरनेट में बहुत ही कॉमन हो गया था कि गेम खेलो और पैसे कमाओ। Until 2023, जब इंडियन गवर्नमेंट ने इस रियल मनी गेमिंग मार्केट में 28% टैक्सेस इंपोज किया, जिसने काफी नए गेम्स को वैसे दबा दिया। द थर्ड टाइप ऑफ गेम इन नजारा टेक्नोलॉजीज पोर्टफोलियो इज फ्रीमियम गेम्स, जिसके अंदर नजारा ओन करता है वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियन गेम, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट क्रिकेट सिमुलेशन गेम विद 1.5 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स एंड 9 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स। WCC यानी कि वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियन में एडवर्टाइजमेंट ही मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, एंड इन फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023 नजारा टेक्नोलॉजीज के लिए WCC ने 23.7 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। इसके अलावा नजारा टेक्नोलॉजीज ने कुछ गेमिंग और उनके IPs भी एक्वायर करें। For example, they have invested $500,000 in Snacks Games and acquired its publishing rights for India. Snack Games is the global game developer and parent company of gaming companies like Scoplay, Plarion and Crazy Lab. रिसेंटली नजारा टेक्नोलॉजीज ने 4 गेमिंग स्टूडियोज के साथ भी पार्टनरशिप करी है उनके गेम्स पब्लिश करने के लिए। पहला स्टूडियो है स्मैश हेड स्टूडियोज, व्हिच हैज क्रिएटेड द गेम ग्रेविटी शूटर। सेकंड इज वंडर माइंड लैब्स, व्हिच हैज डेवलप्ड अ 3D मल्टीप्लेयर क्रिकेट गेम कॉल्ड वर्ल्ड क्रिकेट लीग। थर्ड इज पिक्सल पे दैट हैज क्रिएटेड अ पजल गेम नेम्ड हैक्ड, एंड फोर्थ स्टूडियो इज ATG स्टूडियो विद गेम्स लाइक लेजर टैंक्स एंड पेपर लीग। सो नजारा टेक्नोलॉजीज इज एक्सपेंडिंग इट्स गेमिंग बिजनेस सेगमेंट, दैट टू एज अ पब्लिशर ऑफ द गेम्स, व्हिच आई पर्सनली थिंक इज अ ब्रिलियंट मूव, क्योंकि पब्लिशिंग में ही असली पैसा बनता है। एंड इफ यू आर अ पब्लिशर ऑफ एनी वायरल एंड कॉम्पिटिटिव गेम, इट इज ऑल्सो easy for you to attract the gamers and audience for this tournament or esport. And here comes the second business move of Nazara Technologies. Esports. As we discussed earlier, esport consists of around half of the business revenue for Nazara Technology. That is 49%. And unlike gaming segment where there were many games and companies involved in it, इस esport segment में Nazara Technologies बस 2 कंपनीज ओन करता है, Nordwind Gaming and Sportskeeda, और ये दोनों कंपनीज साथ में मिलके अराउंड 49% का बिजनेस देती है Nazara Technologies को। So it's a big segment for them. Let's understand their business. Nordwind Gaming is an esport company which organizes the esport tournament or league in the collaboration with the publisher of the game. For example, Riot Games, the developer and publisher of Valorant game, has partnered with Nordwind Gaming to organize the Valorant tournament in whole Southeast Asia for 2024.
ESL, that is Electronic Sport League, the oldest and one of the biggest esport company, has also partnered with Nordwind Gaming to organize the BGMI tournament with a prize pool of $1,20,665. In August 2023, Nordwind Gaming organizes the BGMI tournament directly partnering with its publisher Krafton with the prize pool of $2,54,465. ऐसे ही thousands of tournaments are organized by Nordwind Gaming with hundreds of games in all over India and Asia. Now casual gaming ना बहुत vast है क्योंकि इसमें सारे ही games include होते हैं. From basic games like Candy Crush, Puzzle to multiplayer online battle games like League of Legends and Dota 2. सारे games ही casual gamings में आ सकते हैं. And from a new player to a hardcore gamer, everyone comes under the casual gaming. Until and unless the person is playing for the tournament. And once the player is playing professionally for the tournament, it comes under the esports. Because both of them, casual gaming and esport, has a different business model. In casual gaming, the one who is playing the game is actually the consumer of the gaming business. But in esports, the player are the part of the business model and the audience is the real customer. क्योंकि जितने लोग esport के टूर्नामेंट को देखेंगे, टूर्नामेंट उतना ही पैसा बनाएगा. In esport, there are mainly 4 sources of revenue. First and major one is the sponsorship and brand partnership. So just like in IPL, there is the title sponsor, tournament sponsor, team sponsor and sometimes player sponsors. Esports में भी sponsors का बहुत बड़ा presence है. For example, League of Legends का esport tournament ESL और Riot Game जो कि League of Legends का publisher है, वो हर साल globally organize करती है. इस टूर्नामेंट को पिछले 4 साल से यानी कि 2020, 2021, 2022 and 2023 में continuously Mercedes-Benz ने sponsor किया है. और Mercedes-Benz तो एक poster boy sponsor रहा है. इसके अलावा काफी बड़ी कंपनीज भी इस टूर्नामेंट में एक स्पॉन्सर थी, लाइक Red Bull, Intel, HyperX, Logitech, Amazon Prime, Mastercard, Oppo, X, State Farm, Bose, Spotify, Cisco, etc. etc. And all these companies paid an handsome amount to the organizer of the tournament. Second source of income है media rights. तो फिर से IPL की एनालॉजी लेते हैं. So IPL ब्रॉडकास्ट किया जाता है सेट मैक्स और स्टार स्पोर्ट्स में और स्ट्रीम किया जाता है हॉटस्टार और जियो सिनेमा में. एंड टू ब्रॉडकास्ट एंड स्ट्रीम द IPL मैचेस, ये कंपनीज BCCI को पैसा देती है और BCCI से IPL के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स खरीदते हैं. सिमिलरली ई-स्पोर्ट टूर्नामेंट के कंटेंट के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स भी सेल किए जाते हैं. फॉर एग्जांपल, Twitch owned the live streaming rights of 2022 Dota 2 tournament and broadcasting rights were sold to television network. Third revenue source है ticket revenue. This is the revenue generated through selling the esports tournament tickets. इनके अलावा काफी रेवेन्यू esports टूर्नामेंट का एडवर्टीजमेंट और मर्चेंडाइज सेल से भी आता है. अब ये जो सारे रेवेन्यू सोर्सेस है ना, ये इवेंचुअली डिपेंड करता है कि कोई एक esports टूर्नामेंट कितने आई बॉल्स या फिर ऑडियंस अट्रैक्ट करवाता है. जितने ज्यादा ऑडियंस उतना ही महंगा हो उस टूर्नामेंट का ब्रॉडकास्टिंग राइट्स एंड स्ट्रीमिंग राइट्स, टिकट प्राइस और स्पॉन्सरशिप्स. According to Statista, the total esport viewership has grown to 395 million people in 2018 and the 2017 League of Legends Championship drew over 106 million viewership globally versus 103.4 million people that was the Super Bowl in 2018. This is really fascinating data क्योंकि USA में सुपर बोल का बहुत खतरनाक क्रेज है और इस डेटा से आप पता लगा सकते हो कि ई-स्पोर्ट्स का क्रेज कितना खतरनाक बिल्ड हो रहा है. बट यहाँ पे एक लॉजिकल क्वेश्चन भी रेज होता है कि कोई दूसरे को खेलते हुए क्यों देखेगा और उसके लिए पे क्यों करेगा. वेल, कुछ टाइम पहले तक मैं भी यही सोचता था, बट नाउ आई थिंक टू अ सर्टेन एक्सटेंट आई हैव अंडरस्टूड व्हाई. और इसके पीछे 3 बड़े रीजन है. फर्स्ट वन इज द कम्युनिटी. अगर आप PUBG खेलते हो और आपके फ्रेंड्स के साथ साथ हजारों लोग कोई एक क्रिएटर को फॉलो करते हैं जो PUBG में प्रो है, तो एक कम्युनिटी बिल्ड हो जाती है. और अगर PUBG का कोई टूर्नामेंट हो रहा है तो दैट विल बी द टॉक ऑफ द टाउन ऑफ दैट कम्युनिटी. सेकंड रीजन इज टू लर्न द स्किल एंड स्ट्रेटजी. बाय ऑब्जर्विंग द प्रो प्लेयर्स एंड देयर गेम प्ले एट द ई-स्पोर्ट टूर्नामेंट, गेमर्स इंटेंड टू लर्न वेरियस स्किल्स एंड स्ट्रेटजीज. एंड थर्ड रीजन इज द एस्पिरेशनल वैल्यू. जो गेमर घर में बैठ के गेम खेल रहा है एंड हैव अ विश टू प्ले एट द टूर्नामेंट, उसके लिए ई-स्पोर्ट टूर्नामेंट देखना एक एस्पिरेशनल वैल्यू से कम नहीं. एंड बाय द वे, वाचिंग पीपल प्लेइंग गेम्स इज ऑलरेडी अ प्रूवन कॉन्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीमिंग. अगर आप देखोगे तो गेमिंग स्ट्रीम्स के व्यूज YouTube पर मिलियन पार है, which pretty much justifies our question. Nordwind Gaming is much ahead of everyone in this race of esport. In 2023, Nordwind Gaming ने 388.7 crore का रेवेन्यू किया. That is around 46% of the share of the total revenue of Nazara Technologies. Nordwind is continuously acquiring and investing in different companies, and some of them are not even from the esport. For example, in 2021, Nordwind acquired OML Entertainment, which is the company behind producing stand-up comedy show like Comic-Con, Reezer Vivid, Coke Studio, AIB Divas, NH7 Weekender, चाचा विधायक है हमारे and हक से सिंगल by Zakir Khan. In 2022, Nordwind also acquired 100% stake in Planet Superheroes, which is a gaming merchandise and accessories companies. In the same year, Nordwind acquired 10.26% in Rusk Media, which produces many TV shows including Playground, which is a web show on gaming and casted by India's big content creators like Carrie Minati, Ashish Chanchalani, Harsh Maniwal and Trigger Insan. This Playground show saw 1.5+ billion views with more than 40 million unique viewers till financial year 2022 to 2023. Nordwind has also acquired around 55% in Wings,
which is a gaming gadget and gear company. तो आप देख सकते हो कि कैसे नॉर्डविन गेमिंग अपने टेंटिकल्स फैला रहा है डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स में और एक इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जैसे हमने देखा इन ई स्पोर्ट्स देयर आर मल्टीपल रेवेन्यू सोर्सेज एंड इट्स इंपॉर्टेंट फॉर एन ई स्पोर्ट कंपनी टू हैव अ ग्रिप ऑन दोस, वेदर इट इज अ टूर्नामेंट, मीडिया राइट्स, मर्चेंडाइज, कंटेंट एटसेट्रा एटसेट्रा. नॉर्डविन के अलावा ई स्पोर्ट्स सेगमेंट में नजारा टेक्नोलॉजीज स्पोर्ट्स कीड़ा भी ओन करता है. स्पोर्ट्स कीड़ा इज द स्पोर्ट्स न्यूज एंड कंटेंट साइट वेयर यू कैन गेट रेगुलर अपडेट्स ऑन NBA, NHL, NFL, MMA, motorsports, esports, WWE, soccer, tennis, etc. etc. And its main revenue source is the advertisement on their site. Sportskeeda has also generated around 122 crore of revenue in financial year 2023. Third segment of Nazara Technology is AdTech. Nazara Technology for real is creating the ecosystem in the Indian gaming market, and this segment is the evidence of that. Nazara Technologies in 2019 acquired Dataworks, a digital marketing company. Dataworks provides the services to the company which intend to market or advertise their product online. Its services includes data analytics, performance marketing, advertisement, consulting, and marketing solution. But isn't it just like any other digital marketing company? Or how it will help Nazara Technology in its gaming ecosystem? Well, if you see in gaming, अब चाहे वो casual gaming हो, ई-स्पोर्ट हो या फिर किसी कंटेंट को ब्रॉडकास्ट करना हो, सब में एडवर्टाइजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल प्ले होता है, एंड दैट इज वेयर डाटावर्क्स कम इनटू द प्ले. करंटली डाटावर्क्स इज रिस्पांसिबल फॉर 153 crore of revenue for Nazara Technology. That is 14% of the total revenue. But Nazara Technology has also stated that they will bring more advertisement to their gaming ecosystem with the help of Dataworks, which eventually will increase their revenue. So these are the business segments of Nazara Technologies through which it is building its gaming ecosystem. और ये नीतीश मीटर जैन के इंटरव्यू देख के भी पता चलता है that he has the vision to become big in this booming industry. Recently, Nikhil, Kamath, the founder of Zerodha, has also invested 100 crore rupees against 3.5% stake in the company. So here the question rises. What does the future hold for the Nazara Technologies? But by looking the strategies, communication from the management and their business decision, I think Nazara Technology is eyeing on an opportunity. जब कोई Indian developer एक ऐसा game बनाएगा which will have the potential to go big and viral, so that Nazara Technologies can acquire the game and become the publisher of that game and push it to the higher heights. Indian gaming industry में आज के दिन काफी games बन भी रहे हैं. For example, 2023 में Netflix ने एक इंडियन गेम राजी एंड एंशिएंट एपिक का ट्रेलर लॉन्च किया. ये गेम इंडियन डेवलपर नॉर्डिंग हेड गेम्स ने डेवलप किया था. इट वाज पब्लिश्ड बाय super.com and was distributed by Nintendo Switch, Steam, Epic Game Store, Xbox Store and PlayStation Store. Razi is a story game based on the Indian states traditions. ये पहला इंडियन गेम है जो काफी पॉपुलर हुआ ग्लोबली. यहाँ तक कि it was also nominated for the world biggest game award. There are many gaming developers in India who are working on developing the game. For example, Game On Studio, which is developing the game Mumbai Gullies, an Indian game similar to GTA. Orgi Head Studio is another developer which has developed the games like Asura. And like them, there are many other developers in India which need a hand of a publisher to publish their game. And Nazara Technologies is the publisher who need a studio which can make a potential viral game. Now it will be excited to monitor Nazara Technologies और कैसे वो इस इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के साथ कोप अप करते हैं. And what strategy they will use with going further. तब तक के लिए यू कैन कीप योर आई इन दिस फैसिनेटिंग इंडस्ट्री. मैंने कुछ लिंक्स, वेबसाइट के लिंक्स अटैच किए हैं डिस्क्रिप्शन में और कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच किए हैं, सो यू कैन गेट अ डीप नॉलेज अबाउट दिस इंडस्ट्री एंड ऑल्सो गेट अ रेगुलर अपडेट्स अबाउट दिस इंडस्ट्री अगर आप चाहते हो तो. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक दिस वीडियो और अपने गेमर्स दोस्तों के साथ शेयर करो जिनको इन्वेस्टिंग में भी इंटरेस्ट है, सो दैट दिस वीडियो कैन बी हेल्पफुल फॉर देम. इस वीडियो को आने में काफी टाइम लग गया ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीजंस, सो अपॉलॉजी फॉर दैट. बट फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स यू विल फाइंड कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी इन दिस चैनल. सो स्टे ट्यून्ड. टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग. बाय बाय.